भगवान ने सारे देवी देवता बनाए हैं who have a purpose, वो पर्पस को फुलफिल करने के लिए बनाया है। यस, अंडरस्टैंड? आप लोगों ने अगर अगर if this is against something you already know, then ask questions. You can ask questions. The cause of all causes is Bhagwan. Krishna is the source of all good things. Absence of good is evil. मतलब क्या हुआ इसका? जहां पर भगवान नहीं है वहां पर ईविल होगा। जहां पर राम नहीं है वहां रावण ही होगा। जहां राम होंगे वहां रावण नहीं होगा। जहां राम नहीं होंगे वहां रावण ही होगा और कुछ नहीं होगा। दो ही चीजें हैं, गुड एंड ईविल। हरे कृष्ण। तो अगर हमारी लाइफ में कृष्णा नहीं है तो हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। Everybody understand this? Like this is not very difficult to understand. But let me, अगर सारी लाइटें बंद कर दें तो क्या होगा? अंधेरा होगा, राइट? इस कमरे में तो अगर या तो लाइट हो सकती है या अंधेरा हो सकता है, बीच का कुछ नहीं हो सकता है। या तो कृष्णा है या फिर ईविल है, बीच का कुछ नहीं है। बीच का कुछ नहीं है। इस आप गलत फहमी में मत रहना कि घंटी टिंग 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 कर दी और घुमा दिया तो भगवान आ गए हमारी लाइफ में। नो, दैट इज अ रिचुअल। First of all, you have to understand what does it mean to have Krishna in your life. To have Krishna in your life, you have to give up lust, greed, and anger. Lust, greed, anger, you have to give up. Neither the hosts of demigods nor the great sages know my origin or opulences. This is so beautiful. You know, अब भगवान है, सारी सृष्टि के भगवान हैं और वृंदावन में वो वहां पर ग्वालों के साथ खेल रहे हैं। Is it possible? Yes, it is possible. That's what Krishna wants to do. So Krishna ko, how can you contain Krishna? You cannot contain him by power. You cannot contain him by money. You cannot butter him. The only way to contain Krishna is by love. No other way to contain Krishna. आएंगे ही नहीं हाथ में, आ ही नहीं सकते। उनको सिर्फ प्रेम से जकड़ा जा सकता है। But once Krishna is in your life, then you have tremendous amount of power. What does power mean? What does power mean? Yeah, very good. Yeah. A lot of time people think power equals money. Like if somebody is very rich, then that is a person is powerful. नहीं, हमारे इतने महान महान संत हुए हैं, वो बिजनेसमैन नहीं थे। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, but they had a lot of potency in them. That is what power means. Though inconceivable and unapproachable,
Krishna is not also easily approachable. You have to go up the disciplic succession. कृष्णा से हमने जो 4 परंपराएं, रिमेंबर, हमने 4 परंपराओं पर चर्चा किया था. 4 परंपराएं हैं. उन परंपरा में any one of those parampara, you have to connect to Krishna through that parampara. Then you can understand Krishna very nicely. Because Krishna's message is descending to us through one of those 4 paramparas. He is unapproachable, yet Krishna can be bound by ropes of love. Let me read from chapter number 10, shloka number 5. काफी लंबा है ये, धीरे धीरे पढ़ूंगा मैं. बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भाव भावो भयम चाभ्यम एव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एवा पृथग्विदाः. Meaning, all these things come from Krishna. क्या क्या बोल रहे हैं सुनिए आप. Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of senses, control of mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame, and infamy. All these various qualities of living beings are created by me alone. When you feel disrespected from somebody, that is created by Krishna. When you get respect, that is created by Krishna. Happiness, when you get happiness, is given by Krishna. When you get distress, that also comes from Krishna. यहाँ पर actually Krishna in verse number 10.8 to 10.11 भगवान बताते हैं, भगवत गीता का एसेंस बताते हैं. The essence of Bhagavad Gita. What is the message that Krishna wants to give to Arjuna? So Mataji, you have joined on the perfect time. Even if you miss all the other classes, this is what Krishna wants to tell Arjuna. And to get these next 3 shlokas will dispel every confusion in your life. Every confusion in your life. And it will give you solution for all your problems in life. और वो मैं आपसे पूछूंगा, what is the solution after these 3 shlokas? Okay? So listen very carefully. This determines whether you have understood Krishna's message in Bhagavad Gita or not. Ready? Yes? Aham sarvasya prabhavo matah sarvam pravartate iti matva bhajante mam budha bhava samanvitaha. Krishna says, I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me.
The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Who's the source of everything? Krishna is the source of everything. There are different departments and there are different controllers of those departments. So for example, material world is controlled by Durga Devi. But the ultimate source of the material world and Durga Devi both is Krishna, Bhagwan. Sometimes we worship demigods. It's actually not worship, very bluntly saying. It is a business transaction. मुझे ये दे दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मैं भंडारा करवाऊंगी. पोते का मुंह दिखा दो, मैं ये करवाऊंगी. तो ट्रांजैक्शन है ना. आप मुझे ये दो तो मैं आपको ये दूंगा या ये दूंगी. दैट इज नॉट भक्ति. लेट्स नॉट कंफ्यूज. पीपल थिंक हाँ हम तो भगवान को मानते हैं, हर रोज माथा टेकने जाते हैं वैष्णो देवी, मंगलवार को जाते हैं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं. करिए, लेकिन समझिए कि आप कर क्या रहे हैं. भक्ति इज लव एंड सरेंडर. बहुत डिफरेंट है फ्रॉम रिचुअल्स एंड पूजा पाठ. भक्ति इज तो आई एम योर्स. भक्ति में जो भक्त होते हैं, डिवोटीज होते हैं, वो उनकी ग्रीड बहुत ज्यादा होती है. उनको नौकरी चाकरी, अच्छी वाइफ, हस्बैंड, लड़का लड़की, पोता पोती नहीं चाहिए. उनको सब पूरे के पूरे भगवान चाहिए. गिव ऑल ऑफ यू टू मी एंड टेक ऑल ऑफ मी टू यू. मच्चितामगत प्राण बोधयन्तः परस्परम् कथयंश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. माता जी आपके पास हिंदी वाली है ना? एक बार पढ़ेंगी 10.89 का ट्रांसलेशन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित है और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष. अगर आपको आनंद का अनुभव होता है और संतोष मिलता है भगवान की कथा सुनने के लिए, then you are heading towards being a good devotee and one day you'll become a pure devotee. Purity के लिए समय लगता है. चैतन्य चरित्रता है, which is a very beautiful scripture written by कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जीवन की लीलाएं उसमें लिखी हैं. चैतन्य महाप्रभु, गौर पूर्णिमा, उनको गौरंग महाप्रभु भी कहा जाता है. उसके उनकी तीन लीलाएं हैं, मध्य लीला, अंत लीला और शुरू की है. सो मध्य लीला 22.54 जो है श्लोका, दिस इज रिटन इन बंगाली. इट सेज साधु संग सर्वशास्त्रे कोया लवमत्र साधु संगे सर्व सिद्धि होया. क्या है?
साधु संगे सर्व शास्त्रे कोया। सारे शास्त्र एक ही चीज कह रहे हैं, साधु संग, साधु संग। लव मैत्रा साधु संगे सर्व सिद्धि होया। The verdict of all revealed scriptures is that by even a moment's association with a pure devotee, one can attain all success. Meaning, कभी आपने मैग्नेट देखा है ना, अगर मैग्नेट से लोहे को चिपका दें कुछ देर के लिए, उसके बाद उसको हटाएं तो वो लोहे में भी मैग्नेटिक पावर आ जाती है। Pure devotees are like super magnets. They convert iron filings to magnet. Meaning, this is about spirituality. How does it get transferred from a pure devotee to somebody who's not a pure devotee? उनको देख के we get inspired. Last one, then I'll ask you the question. 10.10. Hare Krishna. Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mama upayanti te. Those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर है, दिस इज अबाउट अटेनिंग कृष्णा. एक पॉइंट आता है, and we are very lucky that we have association of devotees and we are born in Bharatvarsh, जहाँ पर कभी ना कभी during your lifetime you will hear Krishna, Ram, Vrindavan, Ayodhya, Mayapur, Jagannath Puri. You will, so that Krishna wants you to come. Many people catch, many people don't catch. They are entangled in the material world. And many people who catch, of them, a lot of them understand that this is very important and then take on the process. So this cartoon is there, right? Lord, please talk to me. And then he's handing the Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita is not just to Arjuna, it is actually to you. All of your questions only Arjuna is asking, right? How many of you actually saw that in the last jitni bhi classes hui hain, that Arjun asked the question and it was the same question you had in your mind? How many of you felt that? Those of you who joined. Everybody, right? For those who joined. That is the power of Bhagavad Gita. You cannot explain this. In any other book, it will not happen. Well, actually, you can explain this because this is spiritual. So what is the lesson? What is the essence of Bhagavad Gita? Question for you. What is the essence of Bhagavad Gita? Mataji, बताएं. Simple है. Krishna is the source. We are part and parcel of Krishna. If we are connected to Krishna, we have Krishna in our life. That's it. The more we love Krishna, the more we serve Krishna, the more fulfilled
and satisfied we feel. Material things will not satisfy you. It will give you a temporary high, temporary feeling of something. I don't have the right word for it because it is not happiness, it is not content, it is high, some sort of a high. Award mila, high. Promotion mili, high. Uske baad high. Huh? So there's nothing. The material world is not designed. Huh? The material world is not designed to fulfill you. But we look for fulfillment in the material world. That is the only problem. Live in the material world knowing that these are my responsibilities, this is I have to do, but this will not give me fulfillment. चार पोतों का भी मुंह देख लो तब भी fulfillment क्या है उस ठीक है पोते हो गए चार अब क्या अब you are an individual. You have 10,000 other things that you need, which is not fulfilled. I see in my family also, recently we had some birth and people get very attached. Of course, children are like that. But we don't have to attach ourselves to the material world. We have to attach ourselves to Krishna. That is the essence of Bhagavad Gita. Understand? यहां पर नहीं है. इतना तो क्लियर हो गया ना बात? यहां नहीं है कृष्णा के पास, लेकिन यहां रहना है तो यहां के रूल से रहेंगे, लेकिन यहां पर अपना दिल वहां पर मत दो. हार्ट इज विद कृष्णा. तेषाम एव नुकं पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मबाहो सत ज्ञानदीपेन भास्वता. To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born out of ignorance. Ignorance क्या होती है? To think of yourself as this body. That is ignorance. We are not this body. We are a soul living in this body for this life. In next life, we'll have a different body. Understand? हम ये शरीर नहीं है. We are a soul. हम एक आत्मा है. Living in this body. We have this body. Krishna dispels that ignorance. First 3, 4, third chapter, fourth chapter, we went into a lot of detail. Now you've gotten this. Now you can easily understand this. Look at your body. Your body has been changing. It looked very different 20 years ago, 30 years ago, 40 years ago. You actually compare two pictures, you will not be able to recognize it's the same person. It's a completely different body. Many things function same way, many things don't function. And those of you who are now have an older body know this, that even if you want, you cannot perform certain tasks. Willingness is there, but you cannot perform. For those of you who are young, we will get there in some amount of time. So then what is going on? The body is aging, and then we die. Then what after that? You get another body based on your karma. And then you live that life, and then you die again. Then what happens? In another body. Then what happens?
then die. Death, birth, 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 death, birth. Like that. अलग-अलग योनियों में, depending on the consciousness. And then some point in time, after 84 lakh yoniya, you get human life. Human life is an opportunity to get out of this cycle of birth and death. Human life is the only life where you have this opportunity. So this is very, 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 very precious. You cannot waste even a single moment of your human life. This has been given to you to get and attain Krishna. And this lecture, these lectures, these classes, you will not attain Krishna here, but you will get that the purpose of your life is to attain Krishna. That is what you will get in these classes. Then you have to do the process of attaining Krishna, which is chanting, hearing. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. Shravan karna hai, to listen. Kirtanam, Kirtan karna hai, chanting karni hai. And Vishnu, Smaranam, think about Vishnu. This is the process. Understand? How beautiful it is. So simple. You take one step towards Krishna, he takes 10 steps towards. Not very difficult at all. This is the life lesson of Bhagavad Gita. Purity is the force. Books are the basis. What is the force? Purity is the force. Pure people who are pure devotees, they're very powerful. Now we'll talk about the 3 steps to progress. Chapters जो first 1 to 6 होते हैं ना, वहां पर संबंध स्थापित होता है भगवान के साथ, समझ में आता है, अवेयरनेस आती है of who am I, who's Krishna, प्रकृति क्या है, समय क्या है, कर्म क्या है, काल क्या है, इसकी अवेयरनेस आती है हमें. Then second step is to understand the process. Abhideya. The process. That also Krishna tells, right? Those who think of me all the time. Those who are devoted to me in loving service. क्या बताया कृष्णा ने? Those who are constantly devoted to serving me with love. I give them the understanding by which they can come to me. Once he sees, Krishna sees your sincerity, then he gives you the wisdom to see him. You can't see him like that. Until he wants you to see him, you can't see him. That is the process. That is the second step. And the third step is prayojan, which is the goal. What is the goal of life? So we say the goal of life is Goloka, Golok Vrindavan Dham. That is the goal of life. Sambandha. Let's talk about that. You know your relationship with Krishna and the universe. Krishna is the source of everything.
He is the source of knowledge and he destroys all impediments. Abhideya. Apply this knowledge in day to day. Surrender. Thoughts of my pure devotees dwell in me. Life fully devoted to my service. Goal. Develop love for Krishna. Become knowledgeable. Be protected. Derive great satisfaction and bliss, always conversing about me. Arjun Uvacha Param Brahma Param Dhama Pavitram Paramam Bhavan Purusham Shashvatam Divyam Adi Devam Ajam Vibhum. Now when Krishna has mentioned all this, I dispel your ignorance. I am the source of everything. Now Arjun is very curious. Now Arjun says, tell me more. What do you mean, source of everything? Arjun said, you are the supreme personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the absolute truth. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. Adi Devam, original person. Ajam, unborn. Vibhum, the greatest. Somebody read this. Who will read this? Yes, sir. When you love or like something or someone, express it to them. That makes the whole experience sweeter both for you and for others. If you love someone, you have to express it to them. So when you love Krishna, you have to express that to him. And we all have your own expression. You can make nice kheer for Krishna and offer it to Krishna. You will experience bliss in doing that. You can bathe Krishna very nicely and nicely decorated with new clothes and ornaments. You will see Krishna is looking at you. If nothing else, you can just offer him a glass of water or a fruit. Now Arjun questions further. Describe your opulences. How shall I think of you? How shall I know you? He asks these questions. 10.18. I'll go and actually then I will read translations from Bhagavad Gita directly because there were too many to put it on a slide. O Janardhan, again, please describe in detail the mystic power of your opulences. I am never satisfied in hearing about you. For the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. No, Arjuna is actually asking for common people, for the sake of devotees who want to know Krishna better. उनका question बहुत हमारे लिए है. So let me read from chapter number 10, shloka number 20
onwards. I will only read the translation. पहला श्लोका I'll read 10.20. हाँ? 1 2 3 4 चाहिए. हिंदी 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 बहुत जल्दी जल्दी पढ़ूंगा लेकिन मैं प्रभु. अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतास्य स्थिता. अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च. अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च. Bhutanam is living entities. I am the super soul, O Arjuna, seated in the hearts of all living entities. I am the beginning, the middle, and the end to all beings. Of the Adityas, 10.21. Now Krishna will tell. Now Krishna will tell, who am I? Who am I? Who am I? He will take next 20 shlokas to tell who am I, how to see me, how to see me. 10.21. Adityanamaham Vishnu Jyotirsham Ravi Shruman Marichi Marutam Mamsim Nakshatra Ramaha Shashi. Of the Adityas, I am Vishnu of lights. I am the radiant sun. Of the Maruts, I am Marichi. And among the stars, I am the moon. 10.22. अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ. Everybody is there with me? 10.22. We will read translations. Okay. I'll wait 10 seconds. Page number 480, 466. 22. Of the Vedas, I am the Samved. Of the demigods, I am Indra. Of the King of heavens, of the senses, I am the mind. And the living beings, I am the living force or consciousness. Of the Rudras, I am Lord Shiva. Of the Yakshas and Rakshasas, I am the Lord of wealth. Of the Vasus, I am fire. And of the mountains, I am Meru. Of priests, O Arjuna, know me to be the chief Brahaspati. Of generals, I am Kartikeya. And of bodies of water, I am the ocean. Of the great sages, I am Bhrigu. Of vibrations, I am the transcendental Om. Of sacrifices, I am the chanting of the holy names. And of immovable things, I am the Himalayas. Now, next time you see Himalayas, you should think of Krishna. Next time you see sun, you should think of Krishna. Next time you're on the beach, Krishna says, of the water, I am the ocean. That is Krishna. There is no difference between the Creator and His creation. If you're touching Krishna.
You're touching Himalayas. You're touching Krishna. Of the trees, I am the banyan tree, and of the sages among the demigods, I am Narad. Of the Gandharvas, I am Chitrarath. And among perfected beings, I am sage Kapila. Of horses, know me to be Uchay Rishabha, produced during the churning of the ocean of nectar. If you go to Thailand, you will see this big churning of the ocean का वहां पर उन्होंने वो बनाया है, हाँ? Because that's where it happened. एक तरफ पे दानव है और एक तरफ पे हाँ demigods हैं, देवतास, and they are churning. हाँ क्या मैम? हाँ एयरपोर्ट पे बना हुआ है, उस पर लिखा भी है सारा डिटेल्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो लिखा है उस पर। वो ऐसे करते हैं, हजारों साल के लिए वो चर्निंग होता है और द मिल्क ओशन। वासुकी जो सर्प हैं वो रस्सी बनते हैं, रोप, उसमें से पहले हलाहल जहर निकलता है, अमृत निकलने के पहले। वो हलाहल जहर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सब लोग मूर्छित होने लगते हैं। तब भगवान शिव को बुलाते हैं, जितने भी देवता हैं, तब भगवान शिव वो हलाहल जहर पी लेते हैं, लेकिन वो उसको निगलते नहीं है, यहां पर रखते हैं, ना उगलते हैं ना निगलते हैं। कई बार हमको दूसरे लोग जहर देते हैं, उस टाइम पे वी शुड रिमेम्बर उस जहर को यहां पर रख, ना अंदर लो ना बाहर निकालो, वो हार नहीं करेगा। लेकिन हमको जब शास्त्रिक नॉलेज नहीं होती है तो जो कोई कुछ भी हमको देता है हम सब कुछ पी लेते हैं। सब कुछ नहीं पीना चाहिए, कुछ भी नहीं पीना चाहिए आज, कुछ भी खाना नहीं चाहिए, कुछ भी पीना नहीं चाहिए दूसरे का दिया हुआ, सिर्फ भगवान का लगा भोग खाना चाहिए अंदर, इसके लिए क्या। इसीलिए हम लोग कंठी, वी वेयर कंठी। इससे पास नहीं हो सकता कुछ भी जो हार्मफुल है मेरे लिए, ये मेरे गले के नीचे उतरेगा नहीं, ये कंठी इसको प्यूरिफाई कर देगी। लेकिन फर्स्ट यू हैव टू प्यूरिफाई योरसेल्फ। कांट ईट मीट, कैनॉट हैव इलिसिट सेक्स, कैनॉट ड्रिंक, कैनॉट डू गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। देन यू कैन वेयर दिस फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तब तक कंठी नहीं अलाउड होता है, प्रिस्क्राइब नहीं। दैट इज, लोग कहते हैं शिव का प्रसाद है, गांजा पीते हैं, शिव का प्रसाद। शिव जी की तरह रहो, कॉपी हिम फुली। व्हाई डू यू कॉपी ओनली वन थिंग? Understand na fully. It's all rubbish, all rascals. They don't know what they're talking. 10.28 अभी ये और build-up होगा till 39. Krishna says, I am this, I am this, I am this, I am this. So let's keep reading, okay? हाँ नहीं 28, हाँ 28, 27 हाँ 27 complete करिए। Yes प्रभु, go ahead. Of the lordly elephants I am Aravat, and among men I am the monarch. आप कौन सा वाला पढ़ रहे हो? ये वाला ले लो। Next, प्रभु जी, you will read. माता जी, you read. Then प्रभु जी आपके पास आएंगे। 10.28.
आप पढ़ लो। Great. Sir, 29. पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे? यम, the Lord of Death. वो नियम का वो जज है। यमराज जो है जज है। He has the, you know, so, हाँ, अर्यमा, अर्यमा कहाँ आया है? हाँ, departed ancestors. I don't know this. I'll have to let's read if there is there. Actually, जो पितरों की पूजा करते हैं ना, तो पितरों के प्लैनेट्स होते हैं, उसमें से एक प्लैनेट है शायद अर्यमा, जहां तक आई नो। बट क्या क्या लिखा है? Ancestors presided over by Aryama, who represents Krishna. Okay. तो एक प्लैनेट है, वो पितरों का प्लैनेट है। The one who worships, जो पितरों की पूजा करते हैं, वो पितरों के प्लैनेट में जाते हैं। ओके, 30 कौन पढ़ेगा? आप पढ़िए सर। पढ़ेंगे? नहीं, चश्मा। अच्छा अच्छा, चश्मा ये चल जाएगा। अच्छा, I am the worship Radha. Among the poor, I am the kind. Among these, I am the loyal. And among birds, I am Garuda. Beautiful. of purified and the wind. Of guidance of the rifle and armor, of fishes and the shark and of the rivers. Of purifiers, I am the wind. Wind is the best purifier. Of the wielders of weapon, जिनके पास weapon है, I am Ram. रामचंद्र जी के पास जो weapons थे, वो किसी के पास नहीं थे. Of fishes, I am the shark. And of flowing rivers, I am the Ganges. All creation and the history and the earth. Also middle. Poor. All sciences and the spiritual science of the earth. And among logicians and the conclusive. Of the logicians, I am the conclusive truth. Next, 33. कौन पढ़ेगा? मैम पढ़िए आप. एक बार और पढ़िए, थोड़ा लाउडली. Great. Next, मैम पढ़िए आप. 34. Hari bol. I am all devouring death, and I am the generating principle of all that is yet to be. Among women, I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness, and patience. Next. Jitu Prabhu. Of the 35. Huh. Of the hands in the Samaveda and the Star. Hmm. And of poetry and the right. Of month, I am Marga Sutta. And of seasons, I am flower bearing.
Of the hymns in the Psalm Ved, I am the Brihat Psalm, and of poetry, I am the Gayatri. Of months, I am Margashirsha, and of seasons, I am flower-bearing spring. Sir, आप पढ़िए 36. After the gambling of peace and of the splendid and the splendor, and victory and adventure, and I am the strength of this thing. I am the strength of the strong, and I am also the gambling of the cheats. That is also from Krishna. The gambling of the cheats. जो झूठ बोल रहा है, गैम्बल कर रहा है, वो भी कृष्णा से ही है. I am that, Krishna says. Of the descendants of Vrishni, I am Vasudev. And of the Pandavas, I am Arjuna. Of the sages, I am Vyas. And among great thinkers, I am Ushan. So we seek victory and moral. Of secret things and silent, and of the wise. नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? माता जी आप पढ़ेंगी? एक बार और पढ़िए लाउडली. ऐसा there is no movable or immovable being that can exist without me. Next, 3 रह गए. जीतू प्रभु 40. O mighty conqueror of enemies, there is no end to my divine nature. What I have spoken to you is but a mere indication of my strength. माता जी आप पढ़िए हिंदी में. मेरे से किस दोबारा से एक बार और. Last shloka. Who will read? मेरे अर्जुन, अपने विशुद्ध ज्ञान की आवश्यकता क्या है? और वो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर उदाहरण करता है. हरि बोल. इसका परपोर्ट पढ़ सकते हैं प्रभु जी आप? उसके बाद उसका जो तात्पर्य लिखा हुआ है 42 का. 480. उन्होंने बंद कर दिया था. हाँ तात्पर्य. भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं मैं जानने को सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पुस्तक पुस्तक ऐश्वर्य तथा उत्कृष्ट में स्थित है. परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है. भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उच्चतम में स्थित है. इसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उन्हें परमात्मा में है. ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक बिंदु तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन.
एक ऐसी धार्मिक संस्था मिशन है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम रक्षा की प्राप्ति होगी, किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को तुरंत या निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता में परमेश्वर विभूति के अंश मात्र है। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्भव हैं, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे असमोर्टम है, तो जिसका अर्थ है कि न तो कोई उसमें श्रेष्ठ है न उनके तुल्य। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में चाहें, वे ब्रह्मा या शिव की क्यों न हो मानते हैं, वे पखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है, तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनात्मक कृष्ण भावना वृद्धि अपने मनों में खाकर करते हैं। वह वे उनके दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक में 7 और 11 7 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यह विधि है कि इस अध्याय में किसी बड़े भान की व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण तंत्रा के महान आचार्य श्री गुरुदेव दिव्य भूषण इस अध्याय के टीका का समापन इस कथन में करते हैं। प्रभु सूर्य में कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है, तो सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूज्य है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य। हरि बोल। तो सूर्य की का तेज कहां से आता है? भगवान से आता है। सूर्य का तेज कहां से आता है? भगवान से आता है। तो लव कृष्णा, आप अगर हमारे मंदिरों में जाएंगे तो आपको एक चीज एकदम राइट अवे अट्रैक्ट करेगी, द वे द डीटीज आर डेकोरेटेड। भगवान का जो श्रृंगार होता है वो बहुत सुंदर होता है, क्योंकि लव इज इन द डिटेल्स। If you love somebody, you will pay attention to details. What does he like? What does she like? What does she want? What does she not like? What color is her favorite? His favorite? What food? What kind of fragrance? All of that इस सब का बहुत ध्यान रखा जाता है. The purer we become, the more we think of the Lord and others and less of ourselves. हमने तो ये पूरा पढ़ ही लिया directly from Bhagavad Gita, so we don't have to do. But I have some pictures for you. So next time when you see these things, you go for your vacation, you will not forget Krishna. The first is glimpse of fragment of Krishna's glories. And Krishna's essence of all the things. He is the mind. He is the life force. He's the ocean. He's the lion. So, of all the different varieties of movable and immovable beings, the one that is the most, the best of the lot, that represents Krishna. Yes. Yeah. 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 Exactly. Yes. Yes. Exactly. Yes.
Yes. Even that healthy and Yes. Yes, exactly. Hari Bol. Big clapping for Prabhuji. Very nice. Anybody else? You want to say something? The more we think about Krishna and less we think about ourselves. See Krishna everywhere. Narad Muni, Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj was born in a demon family. He was a demon in a demon family, but वो भक्त भी थे. Ganga Nadi. Silence is Krishna. Death is Krishna. Death is not the end, it's a transition to the next life. Spiritual science is Krishna. Yeah. Water the devotion by developing eagerness to hear. It increases the faith, conviction, and determination. We read this shloka already. The bottom line of that chapter number 10 is anything good in me is a reflection of Krishna. So, what are some of your learnings from today's session? Who wants to share? Please raise your hand. Muna mein sab pura. Yes, Mataji. Hmm. 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 हाँ, भगवान ने ग्रीड बनाई है, लेकिन भगवान ने ये भी बोला है कि you should not have greed. So we have to get rid of greed and we have to go towards Krishna. If we go towards greed, then we will go to the wrong direction. And greed, if Krishna is there, then greed will not be there. Yeah, early on in the session today, we heard if Krishna is present, then there is no evil. Greed is evil. Lust, greed, anger are the three gateways to hell. Lust, greed, anger. So, how to get away from greed is through chanting. Take Krishna's name and do your chanting. Yes, Prabhu. Yeah. 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 Yes. Yeah. 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 Brilliant. Yes. And I think for any of the life tasks also. Brilliant. Thank you for sharing. So let's do one round of chanting today.
प्रभु हमारे पास बीड्स हैं क्या? हाँ है। We'll do one round of chanting, then we'll go for prasadam. Okay? तो चैंटिंग में जो हमारी बीड्स हैं, हाँ खोले से, हाँ नहीं प्रभु वो इसी में डाले होंगे, नहीं नहीं है, आई डोंट नो, वो पड़े हुए हैं उसमें। प्रशांत प्रभु ने, प्रशांत प्रभु है इसी में है। अच्छा प्रशांत प्रभु, एक तो यहाँ पर है। तब तक एक अनाउंसमेंट है। 19 मार्च 19 मार्च को we have organized a very special trip to Vrindavan for all of you. Okay? And this is specially done for the devotees who have been in our programs for a while and now have a craving to go to Vrindavan. ये सिर्फ एक दिन का ट्रिप होगा, from morning till evening, so it's very light from logistics standpoint. You don't have to stay there for and do all of that. The bus will start in the morning around 6-ish, 6 a.m. from the temple, and then we'll come back at night at the temple itself. Temple is hardly 10 minutes from here. So all of you should come and also bring other people in your family who have not been to Vrindavan, because everything is organized. वहां पर प्रसाद कहाँ है, कहाँ पाना है, कब पाना है, you don't have to worry about those things. You just go and यहाँ से जाएंगे तो कीर्तन करते हुए जाएंगे बस में, वहां जाएंगे भगवान के दर्शन करेंगे, पहले इस्कॉन टेम्पल जाएंगे, वहां के दर्शन करेंगे, यमुना जी में बोट राइडिंग होगी, मे बी बोट पे कीर्तन होगा, एंड कुछ टेम्पल्स हैं जो प्रोमिनेंट टेम्पल्स हैं वृंदावन के, वो वहां पर विजिट भी करेंगे. सो इट विल बी अ वेरी नाइस trip, and it will really connect you to Vrindavan and to Krishna and the glories of Krishna and the glories of Vrindavan. Actually, इतना बड़ा क्राउड मैनेज करना ना बहुत मुश्किल है वहां के बिहारी. बन तो गया है. बट मदन मोहन टेम्पल है ना, मदन मोहन बहुत सुंदर टेम्पल है. हाँ, दामोदर, राधा रमन, दामोदर. ओके, तो कितना था प्रभु कॉस्ट इसका? बहुत नॉमिनल था. हाँ, कितना? 1200 some. It's a very nominal cost for going and coming. तो प्लीज रजिस्टर, एंड अगर आप आज रजिस्टर कर रहे हैं तो पे, सो दैट हम लोग बुक करा दें. सीट्स आर वेरी लिमिटेड. कितने रह गए प्रभु? अभी 15 या 20 सीट्स रह गई हैं. और कितनी, 2-3 बसेस, 4-5 बसेस जाएंगी, ऐसा कुछ. 100 पीपल वर देयर टोटल ना. हाँ, तो हमने अपना ले लिया था स्लॉट की 20 लोग हमारे कम से कम जाने चाहिए, क्योंकि देयर आर 3 अदर क्लासेस विल बी कमिंग. सो प्लीज बुक इट,
क्योंकि अगर अगले हफ्ते तक भी बुकिंग नहीं हुआ तो फिर शायद हमारे 15 स्लॉट्स खत्म हो जाए फिर होगा। सो बुक इट एज अर्ली एज यू कैन। ओके, ओके। चैंटिंग इज, यहां से शुरू करते हैं विष्णु बीट से। उससे जाएंगे तो कहाँ पर आपको मिलेंगे? आप फोन कर बस कहाँ जाएगी जाके? पार्किंग एरिया हमारा बस का थोड़ा वॉक, हाँ, ई रिक्शाज हैं। सो सब लोग ई रिक्शाज में 2 4 5 ई रिक्शा से बैठ के सब लोग, हाँ, उसका भी आनंद आता है बड़ा। सबको बांके बिहारी जाना है तो बांके बिहारी में बहुत भीड़ होती है। Most of land is Radharama, which Lord manifested by himself out of one Shaligram Shila, automatically. And Vashuvair, Gopala Vaishnav. And still today, whosoever wishes anything, your heart in front of that God, immediately. Obviously, as the Galat Krishna. नहीं, निधिवन के पीछे। आजकल वहां पर एक गाना चलता है रात में, राधा रमन जी जहां पर है, होली का टाइम है ना, रसिया को नार बनाओ री रसिया को, होरे रसिया को, मोरे रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को। ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओके, नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ये मंत्र हम बोलते हैं शुरू में, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। उसके बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। Okay, so I will say then you hear it, then you say, Jai Shri Krishna Chaitanya, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vashadi, Gaur Bhakta Vrinda, Gaur Bhakta Vrinda. Now from the next movie, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Ram, Hare Ram. Ram Ram, Hare Ram, Hare Ram. Ram Ram, Hare Ram Ram, Hare Ram Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram. Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Ram, Hare Ram. Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare Ram. Krishna, Krishna, Hare Hare Ram. Krishna, Hare Hare Ram, Ram. Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare.
Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare